Good morning, everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ. And let's begin today's class for economics and finance issues and analysis. Okay. Good morning, Gaurav. Good morning, Isha. Let's start the class. Wait a minute. Okay. Okay. So first news again, something from exports. We have seen that our exports have grown for the year 6% के आसपास overall. ठीक है, but March में contract किया है. Since exports have contracted in March, so we will see how our export have performed for the top 10 destinations, export destinations of India. ये देखना है कि top 10 में क्या किया. So पहली चीज तो ये है कि contract किया है, but दूसरी चीज ये है that 5 out of these 10 have shown growth and 5 of these have shown contraction in export. सबसे ज्यादा growth कहाँ हुई है? Netherlands में around 42%. Here, highest growth in top 10 for Netherlands around 42%. You can see here around 42% for Netherlands. ठीक है, and highest contraction here in Hong Kong around 28.5%. ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ हुई टॉप 10 में? नेदरलैंड. सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हुआ? हांगकांग. पॉइंट नंबर 3, हाई टॉप रेटेड कंट्री वेयर आवर एक्सपोर्ट्स ग्रो. सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया कहाँ पे हमने? यूएस में. ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया यूएस, हाईएस्ट ग्रोथ नेदरलैंड, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन हांगकांग. 3 इंपॉर्टेंट डेटा, रिमेंबर दिस. सो नेदरलैंड highest growth, Hong Kong highest contraction, and United States the highest exports by value that we do. Okay, so here it is written same. A slowdown in demand for Indian goods from 5 of top 10 markets in the US, UAE, Bangladesh, Germany, and Hong Kong. ठीक है, sharp contraction in exports by around 14% in March. ठीक है, 14% in March. इतना एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ in top 10. Also, these top 10 export destination accounts for 52% of the value of goods exported in March. ठीक है, ओवरऑल जितना एक्सपोर्ट हम करते हैं उसमें मोर देन 50%, अराउंड 52% वी आर एक्सपोर्टिंग टू टॉप 10 डेस्टिनेशंस ओनली. ठीक है, टॉप 10 में 52%, रेस्ट 48% द रेस्ट ऑफ द नेशंस. 190 देश है, उसमें से 10 में हम लोग 52% एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, now the countries that witnessed growth were highest Netherlands, as I told you, around 42%. Just remember this. और कोई डेटा याद रखने की जरूरत नहीं. 18.6% growth in Saudi Arabia, UK, China, and Singapore. Okay, even with China, our export have expanded by 15%. तो our obviously calendar year में हमने देखा था जब Chinese custom से डेटा रिलीज किया था that between India and China the trade deficit is now over $100 billion. ठीक है, बट स्टिल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है चाइना में. ओके, एंड इंपोर्ट्स हैव डिक्लाइन. वी हैव सीन दैट इन स्टडीज क्लास आल्सो. ओके, नाउ the last point, during financial year 23 exports grew only 6% to $447.46 billion. अब ये जो एक्सपोर्ट है, दिस एक्सपोर्ट इज फॉर गुड्स और मर्चेंडाइज. ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट. टोटल एक्सपोर्ट कितना है सर्विसेज एंड गुड्स लेके? $770 billion. Okay, now this is a Maymite news, but still you should know कि finance ministry is going to invest or infuse 3,000 crore in public sector unit general insurers like National India or Oriental, like that, because they are really lagging behind in their solvency ratio. What is solvency ratio? Asset upon liability कितनी होनी चाहिए? 1.5 times. ठीक है, the premium that they have to pay asset should be 1.5 times of that. ठीक है, तो solvency ratio should be 150% by the regulatory requirement of IRBAI. We have read about it. Remember this. Important है ये 50% or 1.5 times, whatever suits you. ठीक है, so to improve the fiscal health of the public general insurers that are not doing so good even for solvency ratio,
the government is going to infuse about around 3000 crore, 3000 crore के आसपास they are going to infuse. ठीक है, additional capital infusion of 3000 crore for this fiscal in the 3 loss making public sector general insurance company to improve their health. Okay, it's under consideration, अभी हुआ नहीं है, it's under consideration. Okay, now this is important. Remember these 3 countries, India, Japan and France, to launch platform for Sri Lanka creditors. To launch platform for Sri Lanka creditors. Why? Because there is a debt restructuring program going on for Sri Lanka. ठीक है, श्रीलंका के लिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा है बिकॉज द श्रीलंका इज इन सीवियर डेट क्राइसिस गोइंग ऑन इन श्रीलंका. याद हो अगर तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड पेरिस ग्रुप. 22 ग्रुप का मेंबर है पेरिस ग्रुप. मोस्टली OECD कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ पेरिस ग्रुप. दे आर ऑल्सो अ क्रेडिटर. ठीक है, आइदर दे आर अ क्रेडिटर और दे आर अ गारंटर टू लेट्स से IMF, क्योंकि IMF जा रहा है बेल आउट करने. IMF is going to bail out Sri Lanka by giving them funds. So who will guarantee about the funds? Paris Group is going to guarantee about it. What is Paris Group? 22 nations of OECD. Now, point number 3. Even with Paris Group there, India, Japan and France are going to launch a common platform so that all the creditors of Sri Lanka can come together on a single portal. ठीक है, एंड एड्रेस द डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम ऑफ श्रीलंका. तो ये 3 कंट्री के नाम याद रखना, इंडिया, जापान एंड फ्रांस. ठीक है, इंडिया तो याद रहेगा, जापान एंड फ्रांस आर क्लोज allies of India, so you can also remember that. ठीक है, so India, Japan and France have announced a common platform for talks among creditors to address the debt restructuring program of Sri Lanka. ठीक है, which is grappling with its worst economic crisis. ठीक है, तो तीनों जगह के फाइनेंस मिनिस्टर have given some speeches. Don't need to remember all the name, but still we will talk about that. India की finance minister, you know, Nirmala Sitharaman. For Japan it is finance minister Shunichi Suzuki. Okay, or French director general of treasury Emmanuel Moli. So these 3 are the torch bearers of, let's say, front runner. तीन countries के finance ministers have come together to form a common platform for debt restructuring in Sri Lanka. अब यहाँ पे सारे क्रेडिटर जो पहले दे चुके हैं, लाइक चाइना विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, सो दैट दे कैन रिस्ट्रक्चर देयर डेट एंड श्रीलंका कैन परफॉर्म बेटर विद द IMF bailouts. Now again SEBI news, a bit important. Now SEBI sets up framework for the upfront collection of funds. अब ये upfront collection क्यों है? So because the companies that issue debt securities, okay, debt securities देती है, they have to give a settlement, a part of the contribution to settlement guarantee fund of the limited purpose clearing corporation. अभी settlement guarantee fund क्या है? For example, a default is done by the issuer. ठीक है, जो जिसने debt security issue की, for example, a corporate issue the debt security, it defaults. So the investor's money should remain protected. अब वो protection के लिए क्या करना चाहिए? एक settlement guarantee fund बनाया सेबी ने. So in that settlement guarantee fund, upfront collection किया जाएगा by the debt issuers that are going to issue debt security. ठीक है, so that there is a corpus. Even if a certain company defaults, the investors will be protected, their money will be protected. उसके लिए बना हुआ settlement guarantee fund. ओके, नाउ चेंज यही है कि अपफ्रंट लिया जाएगा, मतलब पहले लिया जाएगा. अपफ्रंट मींस पहले से पैसे ले लिए जाएंगे. ओके, so the Security and Exchange Board on put in place a framework for upfront collection of funds from eligible issuers of debt securities. Okay, means issuers of debt security will have to give 0.5% of their return as a settlement in the settlement guarantee fund of limited purpose clearing corporation. Okay, now what is LPCC? So it is a entity established to undertake the activity of clearing settlement of repurchase agreement. ठीक है,
एलपीसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या है? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द एनी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे एलपीसीसी का काम क्या है? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रीपर्चेज अग्रीमेंट ट्रांजैक्शन। अब ये नया फ्रेमवर्क क्या है? अमाउंट ऑफ 0.5 बेसिस पॉइंट्स, नॉट परसेंटेज, 0.5 बेसिस पॉइंट मीन 0.005%। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दो, उतना परसेंट हो जाता है। 0.5 बेसिस पॉइंट of the issuance value of debt security per annum, ठीक है, based on maturity of debt security will be calculated by the exchanges and placed in an escrow account before the allotment of debt security। ठीक है, whatever will be the issuance value of debt security, for example 100 करोड़ है, ठीक है, तो उसका 0.005% will be in the settlement settlement fund। ठीक है, अब ये escrow account क्या है? So escrow account is an account where the money deposited should be used for the purpose only, for the defined purpose only। अब ये escrow account में क्या डिफाइन किया जाएगा? For the प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ये फंड बनाया जा रहा है। अब ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए फंड बनाया जा रहा है, तो इन केस द कंपनी डिफॉल्ट्स, द फंड विल ओनली बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, दैट्स व्हाई एस्क्रो अकाउंट। तो ये 0.5 बेसिस पॉइंट ऑफ इशुएंस वैल्यू will go to an escrow account। ठीक है, and it will be used in case the company defaults, in case। ठीक है, जनरली एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। दैट्स इट। ओके, नाउ the exchange would transfer the amounts to the bank accounts of the LPCC within 1 working day of the receipt of the amount and inform the details of the same to the LPCC। ठीक है, the exchanges means NSE BSE would transfer the amount to the bank account of LPCC। ठीक है, LPCC का बैंक अकाउंट कौन सा? यही escrow account। This escrow account should be filled कब? Within working day means T+1, within 1 working day of the receipt of the amount and inform the details of the same to LPCC। ठीक है, जब इशू किया जाएगा, डेट सिक्योरिटी इशू की जाएगी एंड पीपल विल go to buy it, they will invest amount। तो जब पैसे आएंगे 0.5% of the issued value you should send it to the fund, and that fund should be a fund कहाँ लिस्ट होता है? It will be listed on any of the exchanges। ठीक है, अब वो एक्सचेंज से पैसा एक दिन के अंदर आपको भेज देना है कहाँ? LPCC, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, okay, so just remember this 0.5 basis points here। okay, and there is a settlement fund, debt security here। ठीक है, this for debt security settlement guarantee fund of limited purpose clearing corporation। how much settlement guarantee fund? 0.5 basis points of the issued amount। okay, just remember that। okay, now Aadhaar to become must for corporate filing soon। ठीक है, करेंटली आधार इज नॉट मैंडेटरी, पैन नंबर है, एमसीए के नंबर है, दैट इज यूज्ड, बट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अगेन, अभी ये सोच विचार में है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मैंडेट आधार बिकॉज आधार हैज ऑल द डिटेल्स। सो आधार फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, professional in companies like company secretary or CS involved in filing statutory document to bolster the security of statutory filing and ensure accountability। ठीक है, Aadhaar is going to be used for biometric verification of directors and other professionals of a company। ठीक है, also this requirement will apply to those registered as business users on MCA 21 website। अब ये MCA 21 क्या है? MCA means Ministry of Corporate Affairs 21 website। It is for automation of processes। MCA website क्यों? MCA 21 website क्यों? For automation of processes related to Companies Act 56 और 2013। ठीक है, जो Companies Act में जितने रूल, नियम, कायदे, कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो किया जाए, एंड पेपर वर्क कैन बी लेस, द प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड एंड दिस ऑटोमेशन इज डन बाय MCA 21 वेबसाइट। ठीक है, now this will be achieved through two methods: by re-engineering the IT system
from scratch, and second, by gradually introducing new web-based statutory filing form. तो जो MCA21 का थर्ड वर्जन है, वर्जन 3, it is based on both of this. ठीक है, new web-based statutory filing forms is there in the version 3 of MCA21. Okay. Now, know your customer verification is mandatory for business users based on a unique digital signature. So, PAN issued by income tax or director identification number issued by the Ministry of Corporate Affairs. Okay. Ministry of Corporate Affairs. ठीक है, और identification number from professional institute like ICAI etc. are used for the know your customer verification. अभी तक ये यूज होता है. Now even Aadhaar can be used for biometric verification. अभी हो नहीं रहा है Aadhaar, but the thought process is under works. Currently PAN is used. Also, the heightened security requirement now applies to most of the 60 web-based forms rolled out under the third version of filing portal. Filing portal means MCA21 filing portal का third version. Okay. Now simple. Maharishi Rai, from next week, from Monday, I will start the revision. 3 revision I will do it. Vinay, then you will have to ask the management about. I can't do anything. Okay. I hope it give some time, you will like it. Or ask the management for whatever demands you have. Okay. Such type of demand I can't fulfill. I can fulfill your demands regarding economics. If anything, let's say you have a doubt in economics, I can fulfill it. If you, if you have doubts regarding the administration and management, then I can't. Okay. Go to the relevant authorities and your issue will be resolved. Okay, now credit card spend touches a record of 1.37 trillion rupees in March. Not very important for phase 2, remember it. क्योंकि आरबीआई ये डेटा क्रेडिट कार्ड कितना बढ़ा, अकाउंट्स का डिपॉजिट कितने बढ़े, हर महीने निकालता है, कभी कभी 15 दिन पे भी निकालता है, एवरी 15 डेज. ठीक है, तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल रिमेंबर दिस. इन मार्च 1.37 trillion rupees was spent through credit cards, highest. Okay. So credit card spends touched an all-time high of 1.37 trillion in March. Okay. And it is the 13th consecutive month में पिछले एक साल से credit card spends have topped 1 trillion mark. 1 लाख करोड़ मतलब 1 trillion mark को पिछले 13 महीने से क्रॉस कर रहा है credit card spending. Also आगे जाके पता चलेगा highest growth in credit cards issued is by Axis Bank because Axis Bank has overtaken the business of Citibank. Highest number of cards is by HDFC Bank. नंबर 1 कार्ड इशुअर है, सबसे ज्यादा कार्ड उसके हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू ट्रांजैक्शन किसका है, HDFC का है, उसके बाद SBI का है. We will see it. And highest growth is shown by Axis Bank for this year. Okay, so added about 1.93 million credit card in March. Okay, March, guys. Okay, so banking industry added about 2 million credit card. Now these numbers are not important. कहीं नहीं पूछता है गलती से भी. But still, if you want to don't mug up the numbers. फिर महीने बाद चेंज हो जाएगा ये. ठीक है. Just remember the top 3. ठीक है. जैसे हाईएस्ट ग्रोथ किसकी रही, एक्सिस बैंक की. सबसे ज्यादा कार्ड कौन देता है, HDFC बैंक. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मिला. हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर कार्ड देने वाला कौन है, SBI. ठीक. About 63% of credit card spending or above rupees 86,000 crore took place via e-commerce. ठीक है, तो टोटल स्पेंडिंग में से सबसे ज्यादा स्पेंडिंग किसमें, मेजॉरिटी स्पेंडिंग इज ड्यू टू ई-कॉमर्स. ठीक है, मींस पीपल शॉपिंग ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, they have used credit card more than for offline transaction, maybe because online transactions gives you more cash back, that's why. Okay, now the net addition in credit card was led by Axis Bank.
सबसे ज्यादा एडिशन किसका हुआ? एक्सिस बैंक का. वाई? बिकॉज इट टेक्स ओवर द सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो. सिटी बैंक इज आउट ऑफ इंडिया नाउ. Now, the country's largest credit card issuer is HDFC Bank. ठीक है, 2.36 lakh card in March. Now, are also it is written here that exponential rise in spending has not seen a similar rise in the issuance of credit card. ठीक है, नेट एडिशन या नेट ग्रोथ ऑफ क्रेडिट कार्ड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितना वैल्यू ट्रांजैक्शन बढ़ा है. ठीक है, व्हाई इट इज सो? बिकॉज आरबीआई हैज मैंडेटेड इफ अ क्रेडिट कार्ड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर 1 year, एक साल तक इनएक्टिव है, यूज नहीं हुआ है, देन दैट क्रेडिट कार्ड शुड बी ब्लॉक्ड. ठीक है, so that caused a huge correction. That's what it is written, huge correction caused in the banking sector. That's why the net addition has been lower than the growth, the exponential growth of value transaction. Okay, as far as market share is concerned, HDFC Bank is the biggest market share both in terms of cards and in the terms of value spends. ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है SBI. Okay, and third is obviously ICICI. Okay, now we have talked about it. Again, let's see. US is India's biggest trading partner at $128 billion. ठीक है, $128 billion trading between US and India. अब 120 billion trading means import export both. ठीक है, दोनों की बात हो रही है. और चाइना के साथ हमारा ट्रेड इज अराउंड $126 billion. थोड़ा सा से रह गया, नहीं तो नंबर 1 हो जाता. ठीक है, वी आर इम्पोर्टिंग मच हायर फ्रॉम चाइना देन फ्रॉम यूएस. ओके, नाउ let's see this, the comparison with China. So India's trade with US is $128 billion. Oh, sorry, for China it is 113 billion. $126 billion with China was by the Chinese custom. Calendar year 2022 में आया था, उसमें 126. Now $128 billion with US trade है. We have exported $78 billion and imported $50 billion. So we are in a trade surplus with US. ठीक है, trade surplus with US. The ideal country with which India should do trade in rupee is US, because we are in almost balance or a little bit of surplus. ठीक है, ideal country to do trade with is US in rupees, but obviously they have dollars, they will not do. Okay, Russia हुआ, China हुआ, UAE हुआ, even UAE. ठीक है, we are always in trade deficit. We can't do transactions in rupee because they will have a lot of rupee and they're nowhere to spend that rupee. Okay, so ideally US is the country where we can internationalize our rupee, and it is impossible to do that. Okay, with China, $15 billion export and $98 billion import. $15 billion export and $98 billion import. 113 billion total trade. ठीक है, इतना बड़ा ट्रेड गैप है, ट्रेड डेफिसिट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो यूएस इज आवर टॉप ट्रेड डेस्टिनेशन एज वेल एज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन. Now, we have talked about this news earlier also. एक GTRI करके रिसर्च इंस्टीट्यूट है. ठीक है, GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव. नाउ दिस इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, so they have studied about this new tax by the CBAM, cross carbon border adjustment mechanism tax by European Union. By this tax, what European Union is going to do, we have talked about it. Aluminium, steel, etc. They are going to put additional, let's say, cess, environment cess के नाम से, up to 35% that are coming from other countries, जो import कर रहे हैं other countries से. For example, इंडिया से aluminium export होता है यूरोप में. यूरोप import करता है aluminium and steel also. ठीक है, we are second largest in for production of crude steel. अब import अगर हो रहा है, and if you increase the import duty, then the
मीन्स लेट्स से द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि कॉस्ट वैल्यू जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम स्टील, वो वहां जाके बढ़ जाएगी अगर 35% टैक्स लगेगा तो। ठीक है, सो रिमेंबर यहाँ क्या करना है, याद क्या करना है, CBAM किसका मैकेनिज्म है? इट इज ऑफ EU। हाउ मच टैक्स? अप टू 35%। ठीक है, 20 से लेके 35% तक। एंड ये शुरू कब से होगा? फ्रॉम 2026। जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ठीक है, so GTRI has suggested that the government should devise a retaliatory mechanism compatible with WTO norms to deal with the challenges of European Union's carbon tax called CBAM। ठीक है, एक रिटेलिएटरी मैकेनिज्म, मतलब वो अगर बढ़ा रहे हैं तो तुम भी बढ़ाओ एज पर WTO नॉर्म्स। स्टार्टिंग 1 ऑफ अक्टूबर 2000। ओके, स्टार्टिंग ऑन 1 ऑफ अक्टूबर 2023। ठीक है, दिस CBAM mechanism will start from 1 ऑफ अक्टूबर, बट 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि अभी ये 3 साल का एक लॉन्ग पीरियड मिला है, सो दैट द कंपनीज दैट आर एक्सपोर्टिंग और द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट्स आर कमिंग, ओके, दे कैन improve their mechanization। ठीक है, एंड reduce the carbon emission for production of steel or aluminum। if the carbon emission will be less, then import tax will be less। ठीक है, तो यही है CBAM। अगर आप स्टील बना रहे हैं और कार्बन एमिशन ज्यादा है आपके स्टील प्रोडक्शन में, देन 35% टैक्स लगेगा। अगर कार्बन एमिशन कम होगा तो टैक्स कम लगेगा, अगर नहीं होगा, कार्बन न्यूट्रल रहेगा, तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच कार्बन you are emitting to produce a ton of steel। Okay, so EU will implement the carbon border adjustment mechanism, which will result in 20 to 35% of tax on specific imports in EU beginning from 1st of January 2026। It will be levied on steel, aluminum, cement, and fertilizer। Okay, we have read about this IT norms। IT norms are going to start from October 1st। ठीक है, with a leverage being given to banks from 12 months to 36 months डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ठीक है, 1 साल से लेके 3 साल तक का लेवरेज दिया जाएगा फॉर टू adhere to the new guidelines regarding IT norms। ठीक है, where information technology services will be outsourced by the banks। ठीक है, तो ये नए नॉर्म्स के लिए अगर आपने अपना रिन्यू कराया है 1 अक्टूबर से पहले, तो यू विल बी गिवन 1 ईयर पीरियड। ठीक है, टू go to the compliance or to be in compliance with the new norms। But if your let's say renewal of the IT services is beyond 1 of October, then you will be given up to 3 years। ठीक है, 36 month मिलेगा to be in compliance with the new norms, new IT norms। अब ये क्यों किया गया है? So some industry experts have said, some industry expert, that Reserve Bank regulation on outsourcing of IT services by the banking sector entities is aimed at improving corporate governance and will protect the interest of consumers। ठीक है, they are saying that if IT services will be let's say outsourced to a private company or whatever company, the corporate governance in banking will improve। ठीक है, the services of the banking sector will improve, which ultimately will be beneficial to protect the interest of the consumers। That's what the industry experts have said। ठीक है, so RBI has came out with detailed norms for outsourcing of IT services by banks। ठीक है, non NBFCs and other any regulated entity which comes under the regulations of RBI। ठीक है, ठीक है, अभी मास्टर डायरेक्शन है 1 अक्टूबर आपकी डेट है, याद रखना 1 अक्टूबर 2023 डेट है फॉर IT रेगुलेशन विथ some let's say leverage given by the RBI 1 साल से लेके 3 साल तक, 1 to 3 years। Okay, good morning Diksha। So health app to add phase, हेल्थ ऐप टू ऐड फेस ऑथेंटिकेशन। तो हेल्थ ऐप क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर में आभा ऐप है। आभा ऐप क्या है? आयुष्मान भारत
health account. What is this? This is the digital account of your of all your ailments or sickness, whatever you are dealing with, so that easily portable rahe, so that any government doctors or any doctor per se whose hospital is under national health authority can access your health records. Health record access करेगा तो they can better diagnose. तो ये है आभा ऐप. ठीक है. So now face authentication can also be used, ठीक है, with the help of an Aadhaar number to create Aadhaar ID. That is the news. That is the main news. ठीक है. Let's see. The National Health Authority is in the process of adding another feature to its Ayushman Bharat Health account, Aadhaar app. ठीक है. Now, wherein a user can create Aadhaar ID using face authentication service linked to an Aadhaar number. ठीक है. Now, Aadhaar ID is an initiative under Ayushman Bharat Digital Mission and India's digital health ecosystem, which allows the user to share and access health records digitally. Easy for the doctors to diagnose. Okay, now NHA means National Health Authority is seeking technical support from UIDAI to take this initiative forward. Why? Because face authentication will be authenticated by the face ID of Aadhaar. क्योंकि आधार में आपका face register होता है. So you have to take permission of UIDAI to use the biometric identification. Even face authentication is biometric authentication with the help of Aadhaar. तो tech support कौन देगा? UIDAI. किसको देगा? National Health Authority. Why? To enable Aadhaar IDs to use face authentication with the help of Aadhaar. Okay. Diksha, yeah, the revision will be done from next week. Don't worry, revision will be done, and you will be good to go for if anyone is giving IFSCL. क्योंकि RBI तो हो नहीं रहा है अभी, at least जुलाई तक. ठीक है. The new forecast is July. Okay, now economy likely to grow by 6.5%. Now 6.5% number is given by Economic Advisory Council to the Prime Minister Sanjeev Sanyal, who is a member of EAC. ठीक है. संजीव सान्याल ने ये नंबर दिया 6.5%. अब ये 6.5% RBI भी बोलता है. 6.5% baseline GDP is given by economic survey budget also. ठीक है. याद करने की चीज ये है इसमें that 6.3% is given by World Bank, 6.4% is given by ADB. ठीक है. Both World Bank and ADB has reduced India's growth. Also, OECD, okay. OECD has said 5.9% growth, and IMF has reduced India's growth by 0.2% to 5.9%. ये numbers याद रखना. OECD ने 0.2% बढ़ा के 5.9% किया, IMF ने 0.2% घटा के 5.9% किया है for FY24 और 2023 जो भी लिखा हो, 2023 लिखा हो या फाइनेंशियल ईयर 24 लिखा हो. ठीक है. इन वेरियस रिपोर्ट्स दैट यू स्टडी. ठीक है ना. तो रिमेंबर ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड बैंक 6.3, ADB 6.4, OECD 5.9, IMF 5.9. Okay. Now, government plans to prepay off budget bonds. Investors non-keen to exit bonds with high interest rate. अब ये ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. ठीक है. आई विल नॉट राइट इट, बट कहानी है, सुन लो. सरकार का बहुत कुछ कर देती है कभी कभी. सो वी ऑल नो borrowings means fiscal deficit. Whatever fiscal deficit is with you, you do the borrowings to offset the fiscal deficit. ये तो मालूम है. Now, as per FRPM, fiscal deficit कितना होना चाहिए? 3% होना चाहिए. चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 3.5 कर लो. 3% करना था ना 2021 तक. 3% होना चाहिए कितना? फिस्कल डेफिसिट. सो बोरोइंग्स इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, बट वी हैव टू बोरो मोर. ठीक है. FRBM के टारगेट्स को भी, मतलब इफ यू वांट टू बी फिस्कली फ्रेजाइल, फ्रूगल एंड फिस्कली प्रूडेंट, देन यू विल हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ FRBM एक्ट. FRBM क्या कहता है? 3% होना चाहिए हमारा फिस्कल डेफिसिट. वो तो वैसे ही भागा रहता है इधर उधर.
ठीक है, अभी कितना चल रहा है, 6.4 है। अगले साल कितना करना है, 5.9, 2026 तक कितना करना है, 4.5 फाइनेंशियल ईयर। सो टू कंटेन द फिजिकल डेफिसिट and to contain the borrowing by the government, what the government does is the government asks the other public sector units to borrow. And borrow how? By releasing some bonds. ठीक है, the bonds released by these public sector units are high risk because they want to raise money. High risk है। और दूसरी चीज ये है, हाई रिस्क इतना नहीं होता बट दे वांट टू रेज मनी इमीडिएटली। ठीक है, मींस गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी मोर। तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देती है गवर्नमेंट फॉर ऑफ बजट बोरोइंग। तो ये होती है ऑफ बजट बोरोइंग। बजट बोरोइंग मींस ऐसी बोरोइंग जो बजट में मेंशन है। बजट में कौन सी बोरोइंग मेंशन होती है, दैट इक्वल्स द फिस्कल डेफिसिट। इफ यू इंक्रीज योर बोरोइंग, योर फिस्कल डेफिसिट विल इंक्रीज। दिस विल शो दैट योर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजेस। दैट विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, तो करेंगी क्या गवर्नमेंट, अब पैसा तो चाहिए। क्यों चाहिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए चाहिए, फूड सब्सिडी के लिए चाहिए। ठीक है, घर बना रहे हैं उसके लिए चाहिए, साफ सफाई करा रहे हैं उसके लिए चाहिए। लेकिन बोरोइंग कम है, बोरोइंग बढ़ा भी नहीं सकते। तो क्या करती थी गवर्नमेंट पहले, फाइनेंशियल ईयर 22 के पहले, दैट दे यूज्ड टू आस्क द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लाइक नाबार्ड और एफसीआई टू रेज मनी वाया बॉन्ड्स। तो ये होती थी ऑफ बजट बोरोइंग, जो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में नहीं दिखती थी। बजट में, बजट इज गवर्नमेंट बैलेंस शीट, वो उसमें नहीं दिखती थी ऑफ बजट। बट द गवर्नमेंट करेक्टेड द कोर्स, अपना ये कोर्स करेक्शन किया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22, वी विल सी इट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22 से थोड़ा अपना कोर्स करेक्ट किया गवर्नमेंट ने, एंड दे इंक्लूडेड दीज ऑफ बजट बोरोइंग्स इन द बजट इटसेल्फ। ठीक है, लगभग अभी देखोगे तो 6.7 लाख करोड़ की ऑफ बजट बोरोइंग की थी अप टू फाइनेंशियल ईयर 21। उसका कुछ पार्ट यानी कि अप टू 5 ट्रिलियन रुपीज या 75% दे ब्रॉट इन द बैलेंस शीट, यानी बजट के अंदर ले आए इन फाइनेंशियल ईयर 22 बजट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पहली बात तो एफसीआई के सर पर से उतना लोन हट गया एंड द गवर्नमेंट बिकेम मोर अकाउंटेबल। ठीक है, इट शोज दैट गवर्नमेंट इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स ऑफ द कंट्री। लेकिन 5 ट्रिलियन या 5 लाख करोड़ बजट में लाने के बाद भी 1.7 लाख करोड़ इज लेफ्ट विथ व्हाट, नाबार्ड, एचयूडीसीओ। ठीक है, तो ऐसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बॉन्ड्स रिलीज किए थे टू रेज फंड्स, नाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू पे ऑफ दिस आल्सो। ठीक है, क्योंकि 5 लाख करोड़ वापस कर दिए। ठीक है, वो लोन चुकता कर दिया। ठीक है, नाउ 1.7 लाख करोड़ दैट इज लेफ्ट, द गवर्नमेंट वांट्स टू पे ऑफ दैट आल्सो, दिस ऑफ बजट बोरोइंग आल्सो। बट द investors have the bond. Investors do not want to give the bond back. Why? Because they are getting higher interest rate, around 8.5% का interest rate मिल रहा है for the investors, and it is easily beating inflation. Inflation कितना है, 6% के आसपास है। ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, लगभग 2 से 2.5% का रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रियल इंटरेस्ट रेट, तो 2-2.5% का रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट टू गिव अवे द बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड की मैच्योरिटी 2028 के आसपास है, 2026 से 2028 के आसपास। तो दे डू नॉट वांट टू लूज द मनी दैट दे कैन अर्न वाया इंटरेस्ट। ठीक है, बट द गवर्नमेंट वांट्स टू पे ऑफ 1.7 ट्रिलियन ऑफ बजट बोरोइंग दिस ईयर। So let's see what happens and let's read it. Okay, now the center, which turned over a new leaf in fiscal transparency in the budget financial 22 by ending its practice of off-budget borrowing. ठीक है, ऑफ बजट मीन्स बजट के बाहर की बोरोइंग थ्रू स्टेट रन एजेंसीज एंड वांट्स टू प्रीपे द रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ 1.7 ट्रिलियन रुपीज। 6.7 ट्रिलियन टोटल था, 5 ट्रिलियन वापस कर दिया, 1.7 ट्रिलियन इज लेफ्ट। ठीक है, here the center has off budget liabilities close to 6.7 trillion and it brought about 5 trillion or 75% of such liabilities in the balance sheet or the budget in financial year 22 and 21. ठीक है, mainly the government took 4.27 trillion extra budget resource raised by Food Corporation of India, यानी off budget borrowing by Food Corporation of India. Why? To give food subsidy arrears, food subsidy देने के लिए। ठीक है, एंड हाउ फूड कॉर्पोरेशन रेज मनी थ्रू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। ठीक है, जो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसमें डिप करके वो पैसा उधार लिया एक तरह से एफसीआई ने।
Okay. Now fertilizer subsidy again 67,000 crore, etc. Don't have to go in every number. So जो 1.7 trillion बचा है, that bonds are issued by HUDCO, NABARD, etc. and are offering higher interest rate than the government security. Government security generally 7.5% के आसपास देती है. ठीक है? These bonds are giving more than 8%. So that's why investors are not keen to release the bond before the maturity period. Either they are asking either the government gives a premium or they do not wish to liquidate their bonds before maturity. Okay, so that's it for today. Now let's do the MCQs, easy MCQs. ठीक है, ये बहुत कुछ लिखा रहता है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट नो व्हाट इज ऑफ बजट बोरोइंग. ठीक है, हाउ मच इज लेफ्ट, टोटल कितना लिया, कितना बचा हुआ है, 1.7 ट्रिलियन बचा हुआ है. ठीक है, और लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास का इंटरेस्ट रेट दे रहा है. दैट्स व्हाई द पीपल डू नॉट वांट टू गिव बैक बिफोर द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी. ठीक है. Now let's do the MCQs. Those who will be watching the recordings, please try these MCQs. Okay. And please try to comment also. Okay. Thank you. So which of the three countries have formed the common platform to address the debt restructuring program in Sri Lanka? Okay. Correct answer. Isha Gaurav, right answer. So it is India, Japan and France. सही जवाब. Rus. Correct, Diksha, for the first question. Now question number 2. Let me see that. You can see that. What is the purpose of the framework put in place by the Security Exchange Board for upfront collection of funds from eligible issuers of debt security? Correct, Isha. Correct, Gaurav. Diksha, right. Okay. C. To build a settlement guarantee fund of the limited purpose clearing corporation. Okay. Okay. Now question number 3. What was the percentage of India's top 10 export destinations? Correct. Isha, right. Gaurav, right. Gaurav, right. Diksha, correct. It's B, 52%. Okay. सही जवाब. Correct, Rachna. सही जवाब. B, 52%. Okay. Okay. What was the total credit card spending in March 2023? Answer दिख जा रहा है. Sorry. Okay. Correct, Isha. Right. Correct. सही जवाब. B, 1.37 trillion rupees spent in March via credit cards. Now, easy question. Which country is India's largest export market? Correct, Isha. सही जवाब. Correct, Gaurav. 10 people are live attempt.
And more questions. Okay, largest export market is obviously E is the right answer. सही जवाब. Same answer, different option. Which country has emerged as India's biggest trading partner 2022-23? Yes. Correct, Isha. Correct, Rachna, Gaurav. सही जवाब. Right. C is the right answer, USA. More defense deals, better the options. So what is the recommendation of GTRI regarding European Union's carbon tax? Wait, let me guide myself or something. Okay, one right answer is here. Correct. C is the right answer. The government should devise a retaliatory mechanism compatible with WTO norms. ठीक है, जैसे को तैसा करने को कहा जा रहा है, बस यही है हिंदी में. ठीक है, to retaliate. Okay, now wait. Correct, teacher. Now question number 8. Which which of the following is the aim of RBI regulation for outsourcing of IT services by the banking sector? Correct. The right answer. सही जवाब. Any more guesses? और कोई है यहाँ पे? धुरंधर. Okay, so 8th का option is C is right answer. To ensure corporate governance and protect the interest of customers. Okay, now 9th. What is the new feature that the National Health Authority is adding to its Ayushman Bharat app? Correct, Isha. Correct, Gaurav. Okay, B is the right answer. The new feature that is ability to create Aadhaar ID using face authentication linked to Aadhaar card. Okay, last question. What is the carbon border adjustment mechanism that the European Union is implementing? Not B. एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स क्यों लगाएगा कोई भी कंट्री? ओके,
Wait, let me be invisible. सही जवाब. Okay, yes, that is right. A is the correct answer. A tax on specific imports into the European Union beginning from 1st of January 2026. ठीक है. और ये मैकेनिज्म का टैक्स शुरू होगा 2026 से. दिस मैकेनिज्म विल स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम 2023 October. So I think question number 10 was the last. That's it for today. Thank you everyone for joining. Uh, okay, Russ, I will ask the team if they will do something. Russ. Thank you everyone for joining. I hope you like the lecture. अगर आज के lecture से आपके knowledge में value add हुआ है तो do like and share. मिलते हैं in the next class. And if you have any queries regarding the subject, you can reach out to me on Telegram. Okay, thank you. Thank you. Bye bye.